Next topic we are going to discuss is about the maintenance functions. Maintenance functions in case of the sponges. पहले इसकी food देख लेते हैं. Sponges feed on particles that range in size from 0.1 to 50 micrometer, and their food consists of bacteria, microscopic algae, and protists, and that of the other suspended organic matter. The prey are slowly drawn into the sponge and consumed. Large populations of sponge play an important role in reducing the turbidity of the coastal waters. A single Leucon sponge 1 cm in diameter and 10 cm high can filter in excess of 20 liters of water every day. यानी वो फिल्टरिंग में जो है हेल्प आउट करती है. 20 लीटर वाटर जो है वो फिल्टर कर सकती हैं. रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हैव डिस्कवर्ड दैट अ फ्यू स्पॉन्जेस आर कार्निवोरस. कुछ कार्निवोरस होती हैं. दीज डीप वाटर स्पॉन्जेस एस्बेस्टोप्लूमा कैन कैप्चर स्मॉल क्रस्टेशियन यूजिंग स्पिक्यूज कवर्ड फिलामेंट्स. सो इनकी फूड जो है वो एल्जी है, प्रोटिस्ट है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और ये इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है. ये कोस्टल वाटर्स के अंदर जो टर्बिडिटी होती है वाटर की, मैलापन या गदलापन जो है उसको साफ़ करने में हेल्प आउट करती है. ल्यूकन स्पॉन्ज जो है कहा जाता है कि 20 लीटर्स ऑफ वाटर को जो है एवरी डे फिल्टर कर सकती है. कुछ जो हैं वो एस्बेस्टिप्लूमा जो है एग्जांपल है कार्निवोरस स्पॉन्ज की, जो कि स्मॉल क्रस्टेशियन के ऊपर फीड करती है. अब इसके फूड का जो है वो तरीका कैसे है, कैसे ये फीड लेती हैं, किस तरह इंजेस्ट करती हैं. Choanocyte filter the small suspended food particles. Water passes through these collar, and so they are collared near the base of the cell and then moves into the sponge chamber at the open end of the collar. As you have seen, as you have studied in case of the type of canal system, the inner side of the sponge wall is covered by means of choanocytes that are also called the flagellated chambers because they contain a flagella, and they have a network-like structure forming the collar. So जो फ्लैजेला हैं वो करंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो यू कैन से कैप्चर करते हैं. सस्पेंडेड फूड इज ट्रैप्ड ऑन द कॉलर, और कॉलर के ऊपर ट्रैप किया जाता है उनको, एंड मूव्ड अलोंग द माइक्रोविलाई टू द बेस ऑफ द कॉलर वेयर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फूड वैक्यूल. माइक्रोविलाई से ये नीचे जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल हो जाते हैं. यू कैन से चेंज इनटू द फूड वैक्यूल. Digestion begins in the food vacuole by lysosomal enzymes and pH changes. Partially digested food is passed to the amoeboid cells, which distribute it to the other cells. You can say पानी एंटर हुआ ऑस्टिया के थ्रू, एंटर हो गया स्पॉन्जोसील के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर करंट वाटर प्रोड्यूस हुआ, फ्लैजेला ने मूव किया, और वाटर जो है वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स थे वो कॉन्टैक्ट कॉलर से जो है वो माइक्रोविलाई के अंदर मूव कर गए एट द बेस ऑफ द कॉलर. फिर वहाँ से जो है फूड वैक्यूल की फॉर्म में आ गए. फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो अटैच हुए या उसके अंदर आ गए. लाइसोसोमल एंजाइम जो है इनकॉर्पोरेट हुए, उसकी पीएच चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब फूड जो है वो चेंज होगी पार्शियल डाइजेस्टिव फूड के अंदर. अब ये अमीबाइड सेल्स के अंदर मीज़ोहिल के अंदर या मीज़ेनकाइम के अंदर पास ऑन हो गई, और वहाँ से सारे सेल्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. ये इसकी जो है अब फिर इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो फिल्ट्रेशन जो है इज़ नॉट द ओनली वे दैट स्पॉन्ज फीड. सिर्फ एक ये नहीं कि फिल्ट्रेशन की वजह से वो फीड करती है. सम टाइम पिनेकोसाइट्स इन करंट कैनाल पिनेकोसाइट लाइनिंग इन करंट कैनाल में फेगोसिटाइज लार्जर फूड पार्टिकल्स अप टू 50 माइक्रोमीटर. Sponge may also absorb by active transport nutrient dissolved in the sea water. Next is the exchange and the gas exchange and excretion. ये कैसे होती है? Because of extensive canal systems and circulation of the large volumes of water through the pores, large volumes of water through the pores, the all sponge cells are close contact with the water. Thus, nitrogenous waste removal and gas exchange occurs by the diffusion. डिफ्यूजन के थ्रू जो है नाइट्रोजन वेस्ट भी आउटसाइड जा रहे हैं, एक्सक्रीशन भी इस तरह हो रही है. सच किसी
सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। अब फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए तो इनकी कोऑर्डिनेशन देखी गई, नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह की है इनके अंदर। स्पॉन्जेस डू नॉट हैव नर्व सेल्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस, कोई नर्व सेल ऐसे नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल वाटर सर्कुलेशन थ्रू सम स्पॉन्जेस इज एट मिनिमम एट द सनराइज, लेकिन पानी की जो सर्कुलेशन है वो कम से बहुत कम है सनराइज़ के टाइम पे। एंड मैक्सिमम का क्या है, कब है, बिफोर सनसेट, सूरज ग़ुरूब होने से पहले एकदम से उसके अंदर एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। बिकॉज लाइट इनहिबिट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोरोसाइट एंड अदर सेल्स सराउंडिंग द ओस्टिया and keeping in current canals open. Other reactions, however, suggest some communication among the cells. For example, the rate of water circulation through a sponge can drop suddenly without any apparent external cause. अचानक से जो है पानी के करंट का जो बहाव है वो कम हो जाता है, रेट जो है उससे कम हो जाता है। और दिस रिएक्शन कैन बी ड्यू ओनली टू द ट्वेनोसाइट seizing activities more or less simultaneously, or this implies some form of internal communication. The nature of this communication is unknown. Amoeba cell transmitting chemical messages and ion movements over cell surfaces are possible control mechanism. एज सच कोई नर्व कम्युनिकेशन नज़र नहीं आते, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अचानक से वाटर करंट का जो रेट है, वाटर सर्कुलेशन का रेट है, वो अचानक से गिर जाता है, क्योंकि ट्वेनोसाइट जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सीज़ हो जाती हैं, एकदम से सारे मिलके जो है वो काम करना बंद या करंट प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, फ्लैजेला की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है। तो इसकी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अननोन है, लेकिन कहा जाता है मे बी अमीबा सेल ट्रांसमिट करते हैं कि सम केमिकल मैसेजेस को या आयन मूवमेंट्स को सेल सर्फेसिस के ऊपर। ये हो सकता है कि इस कंट्रोल मैकेनिज़्म की वजह से ये ड्रॉप होना रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन का या उसका रेज होना वो इस वजह से हो सकता है। और वाटर सर्कुलेशन जो है स्पॉन्ज के अंदर मिनिमम होती है सनराइज़ के टाइम पे और मैक्सिमम होती है बिफोर द सनसेट। Dear student, this is the diagrammatic representation of ingestion. अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलर सेल्स नज़र आते हैं। ये कॉलर सेल्स जो हैं उनके पास फ्लैजेलम मौजूद होता है, और फ्लैजेलम जो है फूड ट्रैप करते हैं। फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड बाय द च्वेनोसाइट एंड फूड वैक्यूल फॉर्मेशन बन रही है, फूड वैक्यूल बन गया है सेकेंड वन। नेक्स्ट वन देखें कि अमीबोसाइट जो है वो रिसीव करता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। अब ये तो स्पॉन्जोसील वाला एरिया है, ये वाला एरिया, एंड ये वाला एरिया स्पॉन्जोसील वाला एरिया है। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास पिनेकोसाइट्स, ये जो बन गए हैं फूड वैक्यूल्स, ये अमीबोसाइट्स के अंदर आ जाते हैं। और आगे जो है आप देखते हैं कि ये आपके पास जो है नेक्स्ट जो है पिनेकोसाइट्स आ जाते हैं। और मीज़ेनकाइम देख लें यहाँ पे। नेक्स्ट जो है साथ में मीज़ेनकाइम के अंदर आपको स्पिक्यूल से नज़र आ रहे हैं, एंड फूड वैक्यूल नज़र आ रहे हैं साइड से, और क्वेनोसाइट्स हैं। क्वेनोसाइट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। फिर एंडोडर्म्स है या च्वेनोडर्म जो है वो नज़र आती है, और फिल्टर फूड पार्टिकल्स है। एंड ये सारा एरिया जो है ये स्पॉन्जोसील का नज़र आता है आपको। और ये है न्यूट्रिशन बाय च्वेनोसाइट इन केस ऑफ द स्पॉन्जेस। ये जो है सारी स्पॉन्जोसील है। Other choanocytes
And some have a power of regeneration, and gemmules are formed and asexual by means of a fusion. This is a diagrammatic representation of sexual reproduction. In case of calcareous sponge, here the fertilization, the calcareous sponge in the first one, sperms are trapped by choanocytes, and egg is lying in the mesohyle adjacent to the choanoderm, and transfer of choanocyte gives up its sperm to the egg. Note that the egg lies next to the choanoderm and that the choanocyte has lost its flagellum. Oocyte is present, mesohyl, and the choanocytes. First one. And the second one, development of sponge larval stages. A is the most sponge. I have a parenchymal larva, first larva, parenchymal larva, 0.2 millimeter, and the B is the amphiblastula larva. Two larvae are shown in case of the in this diagram. Amphiblastula larva. Here it is the amphiblastula larva and parenchymal larva. Amphiblastula larva changes into the adult parenchymal larva, and these are the developmental stages of the parenchymal larva. Amphiblastula larva, outer flagella is present, then it takes the shape of this form, and then the shape containing the pinacoderms, pinacocytes and choanocytes, and parenchymal larva also contains these pinacocytes and the choanocytes, but in the at different angle. So these are the developmental stages of sponge, and showing the parenchymal larva and that of the amphiblastula larva. And the next is the formation of the internal buds or the gemmules. Structure of the gemmule that contain the micropile. Here the micropile, outer membrane, archaeocytes, and monaxon spicules. Monaxon containing the single radiation, you can say single ray is present. And in case of the next one, gemmule in section of a freshwater sponge, Spongylidae, layer of amphidisc spicules and archaeocytes are present, and inner membrane is present. And the next one is the micropile. Here it is the micropile, and micropile is shown, and shell is shown, spicules are shown in the diagram, and spongian fibers are shown, and mass of the thisocytes. These are the masses of thisocytes, and the pinacoderm. This is the pinacoderm. Pinacoderm. Next one is here is the spongian attachment. This is the hatching of the gemmule. This is the hatching of gemmules जो हैं वो streaming out हो रहे हैं through the micropile. This is a diagrammatic presentation of gemmules or the internal buds that are very resistant to freezing and the drying conditions.